Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. A year ago, a 20-year-old Dalit girl from Uttar Pradesh's Hathras district was allegedly gang raped and murdered by 4 upper caste men who were her neighbors. She was subsequently admitted in New Delhi Safdarjung Hospital due to her injuries. She breathed her last on 29 September last year. What followed after her death garnered the attention of the national media and of people across the country. After her death, a postmortem was conducted, and the UP police and the UP government officials brought her body back to her native village, that is Boolgarhi village in Hathras district of Uttar Pradesh. Massive protests broke out across the country demanding justice for the 20-year-old Dalit girl. The print is standing at the exact same spot that we were here last year. Behind me is the Samshan Ghat in a land that has been allocated for the Harijan community of this district. The UP police and the UP government officials cremated the body of the 20-year-old Dalit girl without the presence or the permission of her family members on the wee hours of 30th September. There was massive security in this very spot where the print is right now standing at, with police officials barricading the entire area and preventing the family members and the relatives from seeing the face of the 20-year-old Dalit girl. Even as massive protest by Dalit organizations and activists took place on that very night, the UP government and the UP officials continued with their act in the presence of media personnel and other people of this village. Family members of the 20-year-old Dalit girl are still waiting for justice. In the last 1 year, they have visited the court but not the area where their daughter was cremated. The victim's house is now guarded by 18 to 20 CRPF personnel in 3 different shifts. There is frisking at the entry point as well as a register to note down the details. There are about 8 CCTV cameras and a computer room for surveillance. There is only one entry to the victim's house. Other areas are cordoned off with barbed wires, and the house is guarded constantly by the armed CRPF officials. The family members of the victim are escorted by the CRPF personnel even when they go to buy daily essentials like vegetables. एक साल होने को आई बेटी को, तो ये मान लीजिए कि हम लोग तो खुले में रहने वाले हैं। हम लोग जाने आने में अभी तो कहीं भी जा भी नहीं सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं। सीआरपीएफ की सुरक्षा में है, तो बहुत तो अपने मन में अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग कभी ऐसे में रहे नहीं हैं। तो ये चीज़ है मैम। अभी आदत पड़ गई है इस चीज़ की? हाँ, वो आदत तो यूँ पड़ गई है मैम कि अब कहीं जाने आने को तो है नहीं, अपने घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं आना नहीं। काम पे भी नहीं जाते? नहीं, काम धंधे पे कहीं भी नहीं जाते। नहीं, ये आप लोगों को अकेला कर दिया एक तरीके से? हाँ, हम लोग की समाज ही वो अलग है मैम, चूँकि वो लोग श्रवण जाति के हैं, हम लोग एससी में आते हैं, तो वो उसी विचारधारा से रखते हैं। ये इतना बड़ा एक हादसा होने के बाद भी उन लोगों के जो बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया? नहीं, उनका कोई बदलाव, हाँ, वही चीज़ है, अभी भी कोई बदलाव नहीं है। पहले आप लोग तो उनके खेत वगैरह में काटने भी जाते थे, अभी भी जाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं अब मैम, चूँकि हम लोग तो सुरक्षा में, अब कहीं जाना आना तो कहीं है नहीं। अब जाएंगे भी तो सीआरपीएफ की सुरक्षा में, कहीं सामान लेने के लिए जैसे हाथरस जाते हैं या कोई भी, तो उनकी सुरक्षा में साथ में जाते हैं। Festivals are not the same, especially Rakhi. ये का जब तारीख पड़ती है तो बहुत याद करता अपनी बहन की, वो रोता है जब कोर्ट जाता है तो, और जब त्योहार पड़ते थे अपनी बहन की याद बहुत करता। सब लोग करते हैं, समय समय याद आती है अपनी बेटी की। इस बार आपके जो बाकी के जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, राखी में आई थी वो बांधने? 2 बहनों ने बांधा, एक ने? एक नहीं, बहुत रोए रहो।
था, बोला कि आज वो छोटी वाली होती तो सुबह वो से भी- मारना शुरू कर दिया। वो- आज मेरी बहन होती तो मेरी राखी बांधती। The victim's elder brother, one of the prime witnesses of the prosecution, goes to the court regularly, at least 4 days in a month. He was at the court when ThePrint visited their home on 9th September. He leaves in the morning with the CRPF personnel and comes back only in the evening. कोर्ट में ये है कि यहाँ के जो वकील साहब हैं, वकील हैं यहाँ के आरोपी पक्ष से, तो वो इनका यहाँ पे पूरा ग्रुप है। हमारी मैडम आती हैं अपनी दिल्ली से, तो उनका अपने सबके अपने अपने होते हैं जगह जगह। तो मैडम आई हुई थी हमारी, तो मैं उस समय बान मेरे स्टार्ट हुए थे उसी दिन से। तो उनकी तरफ से कोई वकील था, तो उन्होंने आके और मैडम घूरने लगा और काफ़ी सारी मतलब कि अभद्रता की बात करी। सीमा किस्मा कौन होती है स्पीड तक कपस रखने वाली, सीमा अपनी सीमा में रहे तो अच्छा है। कोर्ट में जज के सामने काफ़ी सारी, फिर मैडम ने बोला कि अब ये ऐसी एसटी का मतलब कि प्रावधान है कि विक्टिम का अपना वकील कर सकता है। काफ़ी सारी मैडम ने बोला था ये चीज़। फिर वो काफ़ी मतलब नोकझोंक हुई थी, ऐसा लगा कि कहीं मारपीट न हो जाए। तो फिर जज साहब ने फिर मैडम को सिक्योरिटी दी थी कि पुलिस वालों को, तो उनको सही सलामत छोड़ के आए अपने सीमा तक। अभी उसके बाद फिर से कुछ हुआ है? फिर से अभी तो कुछ होगा अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने भी वहाँ पर फाइल करा था एक कि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाए, पर वो चीज़ पे मना कर दी कोर्ट ने। तो वो गवाही हमारी यहीं पे चल रही है, पर ये पहले से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी बढ़ा दी गई है। जी, थकने का तो खैर अभी हमारा कोई वो ही नहीं है, क्योंकि जब तक बहन का जब न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठने वाले नहीं है ना कुछ थकने वाले हैं। Family members of the 4 accused believe that they are innocent and complain how they are not allowed to meet them and that the calls are only as short as 2 minutes. नहीं मैम, हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि सुरक्षा में हम लोग नहीं जा पाए। आप लोग उसके बाद कभी नहीं गए? अस्थियाँ लेने के लिए गए थे बस दोनों भाई ना? उसके बाद फिर नहीं गया। भाई भी नहीं गया। लेके आए और हमारी तो बेटी कोई कागज तो मुँह भी नहीं देखने दिया। कितनी बड़ी कागज है, बोला 14 तारीख से 29 तारीख की घटना है मैम। तो कम से कम हमें अपनी बेटी का लास्ट अंतिम मुख्य यात्रा देखने को मिल जाती तो मन में तसल्ली रहती। उन लोगों ने जाने कैसे जलाया, ये तो वही जाने। कोई ना लगाई, नहीं कब लगा कोई। जैसे इंसाफ मिल जाएगा लड़की को, जब लगाएंगे बड़ी फोटो लगाएंगे। The Central Bureau of Investigation, the CBI, last year in December charge-sheeted and charged the 4 upper caste men with gang rape and murder of the 20-year-old Dalit girl. Since the trial in the case has begun, a lot of courtroom drama has unfolded. In March this year, the lawyer and the family members of the 20-year-old Dalit girl were allegedly threatened and mocked at in front of the district judge in the Hathras court. Subsequently, the lawyer and the family members of the 20-year-old Dalit girl petitioned in the court that the case be transferred to the Allahabad High Court. Last month, the Lucknow bench of the Allahabad High Court refused to stay or transfer the trial in the case to the Allahabad court from the special ST/SC court of Hathras. With Manisha, Mondal, this is Bismee Taskin reporting for ThePrint in Hathras, Uttar Pradesh.